that there has been one account which has been debited and one account that has been credited. So by equal amount, we have debited a single account and we have credited a single account. There are cases where more than two accounts are involved. Okay. Therein you have two options. You pass separate entries or you club together the entries to get a compound entry. Compound is the sum total of two entries. So let us see with an example, the concept will be more clear to you. So I take up the first example on your screens. You have received rupees 9980 from Rajesh in full settlement of his account. So this means that Rajesh was a debtor who bought some goods from your business on credit basis and now you have received that amount in cash. Also, further it is mentioned that discount allowed to this debtor is rupees 20. So there are two aspects in this transaction. From the transaction, you can make out that the total debt which was outstanding was rupees 10,000. Okay. And when the payment is done by Rajesh in full settlement, we have given him a discount of rupees 20. So let us try and pass the entries for this transaction. What we will do is we will first, just to explain you, I will help you pass the entry when this transaction would have taken place and now when you are receiving this amount. Okay. So let us start. जब ये ट्रांजैक्शन से आज से 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले हुई होगी, आपने गुड्स सेल करे होंगे क्रेडिट बेसिस पे टू राजेश. ओके. तो उस टाइम पर जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? If I say goods sold to Rajesh on credit basis rupees 10,000, what will be the journal entry for that? Anyone? Goods sold to Rajesh for rupees 10,000. Rajesh Yes, account ma'am. debited to Rajesh was sales amount account. debited. Yeah. Okay. Yeah, ma'am. Rajesh is debited to sales account. Okay, Urvashi and Suraj, thank you. So this means we add a debtor to our account, Rajesh account debit, to sales account. Sales is an income for the business. Incomes जब increase होती हैं तो credit होती हैं. Again nominal account है, credit all incomes and gains. उस टाइम पर आपने ये एंट्री पास करी होगी 10,000 पे. ठीक है. This is only a rough note. You are not writing this in your answer. Okay. Now we proceed to the solution. First part says that we have received 9980 from Rajesh in full settlement. Now this is cash received for the business. When an asset increases in the business, you debit the asset. Cash account debit. Real account है debit what comes in. To Rajesh account because Rajesh is the person who is making this payment. Okay. And debit the receiver, credit the giver. Real account. Debtor था, debtor business में कम हो रहा है. When assets fall, they are credited. So this is the first aspect of the transaction. Any doubt in this? Any question you can ask? Okay. So apart from this, what we see is that the account is fully settled. Fully settled means अब ये account close हो रहा है.
अब आपकी बुक्स में कहीं पर भी राजेश अकाउंट के नाम से कोई अकाउंट नहीं होगा. So you have given a discount of rupees 20 to Rajesh. When the business is giving a discount, is it income or expense for the business? I'm expense. Expense. So yes, all of you agree with this. All expenses are debited. So which means discount given, discount allowed is a nominal account, is an expense account. When expenses increase, the account is debited. Okay. And this discount again is given to Rajesh. So Rajesh account will be credited and here the amount will be 20 rupees. Okay. These two entries will reflect the transaction example number 1. Now, what is compound entry? When I club together both these entries and form a single entry. दोनों एंट्रीज में कौन सा अकाउंट कॉमन है? राजेश अकाउंट. Yes. And in both the entries, Rajesh account is credited. So I can club together this account and form a single entry. What will that single entry be? Cash account debit 9980, discount allowed, पूरा लिखना आप, account debit 20 rupees to Rajesh account. Rajesh account will be credited by full 10,000. Okay, this becomes your journal entry when I club together both the entries. Okay, this is what is known as a compound entry. Compound entry has more than two accounts involved and it is formed by clubbing two or more entries as you have seen. Okay, now अगर मैं अब इसमें if we move into detail then we can see and we can just try and see what is the posting of this entry in the ledger. आप कैश अकाउंट से स्टार्ट करोगे. कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है. डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट और कितने अमाउंट से हो रहा है? आई जस्ट शो दिस as a solution to you also so that you should be clear how compound entries are posted. Okay, so if I have to post this entry in my ledger account, there are three accounts involved. One will be cash account, one will be discount allowed account, and third account will be Rajesh account. Okay, so please pay attention. सबसे पहले हम कैश अकाउंट उठाते हैं. कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. तो कैश के डेबिट पे जाके हम 2 लिख देंगे. क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? राजेश अकाउंट हो रहा है. तो 2 राजेश अकाउंट. Now which amount will be mentioned here? 9980 और 10,000. कितनी अमाउंट से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है? 9980. So here, हाँ, so here you will write the amount 9980. Okay, which account is being credited? Rajesh account is being credited. So to Rajesh account. Again, coming to the second account, discount allowed. Discount allowed is debited. So we move to the debit side. कौन सा account credit हो रहा है? To Rajesh account. और इसमें हम कितनी अमाउंट डालेंगे? 20 रुपीज डालेंगे क्योंकि डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट क्या है? 20 रुपीज. सो दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20 रुपीज. नाउ व्हेन आई मूव टू राजेश अकाउंट, it is credited. I move to the credit side.
There are two accounts which are debited. So I will write by cash account 9980 and by discount allowed account 20 rupees. This is how you will be posting this compound entry. Class, if there is any doubt, yes, please ask the question. Vandan. मैम मैम जैसे मैम एग्जाम में अगर मैम क्वेश्चन आएगा तो मैम हम कंपाउंड एंट्री डायरेक्ट लिखने हैं या फिर मैम हमें थ्री स्टेटमेंट जैसे आपने लिखे है वैसे लिख के करना होगा? बेटा ये वाली स्टेटमेंट तो आपने लिखनी ही नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया. Either you ये can go for A or B, or you can go for this compound entry. यस मैम. Both are correct. मैम Okay? कोई मैम इन दोनों में से कोई भी एक कर ले मैम. कोई भी एक कर सकते. यस मैम. Yes, सूरज. मैम डिस्काउंट अलाउड मैम ये तो आरएसएस तरफ न होगा क्योंकि मैम हम कंपनी जो है क्रेडिट कर रहा है ना, पैसा दे रहा है, मतलब डिस्काउंट कर रहा है. तो हाँ, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है? हाँ अगर नुकसान है मैम, मतलब हाँ. हाँ तो फिर डेबिट होगा ना बेटा. अगर कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है, आपके बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो क्रेडिट होता है, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं. बट व्हेन यू आर गिविंग ऑफरिंग डिस्काउंट टू सम कस्टमर, then that is expense for the company. मैम like giver is credited ना and receiver is debited, right? हाँ, तो इधर कौन सा गिवर है? इधर तो अच्छा यहाँ राजेश रिसीवर है ना डिस्काउंट का. अच्छा यहाँ पे हम नॉमिनल अकाउंट के हाँ, पॉइंट ऑफ अगर व्यू आप से ले रहे हैं, नहीं नॉमिनल मैम? से कर रहे हो, देन राजेश इज द रिसीवर. अगर आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन से कर रहे हो, राजेश इज द डेटर. डेटर इज रिड्यूसिंग बाय 20 rupees. We'll never receive this amount. ओके मैम. Okay. Any other question? Okay, so मैम एक डाउट था. please. हाँ जी, पूछो. मैम जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैम उसमें मैम पहले हमें जर्नल बनाना होगा फिर मैम मैम लेजर अकाउंट मैम ऐसे ही करना होगा ये? हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा, यस मैम. नहीं, उसमें मेंशन होगा कि जर्नल एंट्री करनी है या लेजर भी दिखाना है. जर्नल ही आएगा अगर ऐसी क्वेश्चन आएगा तो. यस मैम. Okay. So do one thing, take 2 minutes and please try making an entry for the second example. Then we'll discuss that. So again for this entry also I'll show you both the effects, कैसे आप ये entry pass कर सकते हो. अगर आप separately करना चाहते हो आप separately कर सकते हो. अगर आप compound entry pass करना चाहते हो, you can do in that manner also. So here class, there is sale of furniture for rupees 8,000, while book value of this furniture was 10,000. So if everything would have been perfectly fine, you should have got 10,000 for this furniture, but you're getting only 8,000. So the difference of 2,000 rupees is a loss for the business. So I will first show you how we pass the initial entry and then the subsequent entry, or how we pass the compound entry.
I'm starting with the first aspect of this transaction. You have sold furniture for 8,000. Sales is an income for the business, and you have received cash of 8,000 rupees. Nothing is mentioned. It is not, no name of the buyer is given. So it is assumed that this entry is on cash basis. अगर आपको बायर का नाम दिया होता और सेल ऑफ फर्नीचर 8,000 लिखी होती तो आप यहाँ पर उसको डेटर की तरह ऐड कर देते. बट सिंस नो बायर इज गिवन, आई विल राइट कैश अकाउंट डेबिट. 8,000 is coming in the business to furniture account. Okay. So furniture is going out of the business. Our furniture balance is reducing by 8,000. We are receiving a cash of 8,000. That becomes cash account debit. Okay, here I have a question. If the business I am talking about would be a showroom of furniture, say I am maintaining these books, sorry, for Urban Ladder, okay, और इसमें अगर हमारा कोर बिजनेस ही फर्नीचर का होता, आई एम ओनिंग अ शोरूम फॉर फर्नीचर, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री कैसे चेंज होती? मैम सेल्स परफेक्टली करेक्ट. फिर आप हाँ सेल्स आ जाता, फिर उसमें आप लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमारा कोर बिजनेस ही क्या होता, फर्नीचर का परचेज एंड सेल. But nothing is mentioned, so we assume that this is an asset which has been sold. Cash account debit to furniture account. Any doubt till here? Please ask. Okay. Now, second aspect of the transaction says that this furniture was worth 10,000. So we have incurred a loss on sale of furniture. ओके, लॉस ऑन सेल अकाउंट लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट लिख सकते हो, एंड दिस विल बी डेबिटेड. ऑल लॉसेस आर डेबिटेड. द अमाउंट विल बी 2,000. ओके, टू फर्नीचर अकाउंट. Just let me complete, then I'll answer. Mridul, just give me a second. To furniture account, 2,000. Okay, so why am I crediting the furniture account again? क्योंकि बिजनेस से जो फर्नीचर बाहर गया है वो टोटल 10,000 रुपीज का गया है. तो अगर फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस मुझे रिड्यूस करना है, इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 10,000. तो 8 plus 2,000, 10,000 of furniture is going out of the business. Yes, Mridul, first you please raise your query. Yes, ma'am. Can we put depreciation account on substitution of loss on sale of furniture? नो बेटा, डेप्रिसिएशन तब होगा जब आप कंटिन्यू कर रहे हो उस एसेट के साथ बिजनेस में. यहाँ पे तो क्लियरली दिया हुआ है कि बुक वैल्यू 10,000 थी, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन के बाद एडजस्टेड वैल्यू थी वो 10,000 थी. ओके, Okay, ma'am. Got it. इट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन. ओके, यस पावन. मैम ये लॉस डिस्काउंट अलाउड नहीं हो सकता? नहीं, इसमें आप डिस्काउंट कौन सा दे रहे हो बेटा? डिस्काउंट दो तरीके से दिया जाता है. या तो आप बल्क में कोई चीज सेल कर रहे हो और क्वांटिटी पे आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, या फिर कोई आपको प्रॉम्प्टली पेमेंट कर रहा है और उस पेमेंट रिसीप्ट पे आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो. यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है, जैसे आपने अपनी कार की वैल्यू 4 लाख लगाई पर आपकी वो कार सेल हो रही है 3,80,000 में, तो वो लॉस आपके लिए कितना हुआ? 20,000 का. दिस इज समथिंग लाइक दैट.
Okay, ma'am. Okay, so discount actually, as I told you, there are two types of discount. एक discount होता है quantity पे, 2+1 free, that is known as trade discount. And one discount is you give the entire payment right now, I will give you 2% discount. That is known as cash discount. Okay? मैम एक डाउट था मैम। हाँ वंदन पूछो। मैम मेरी सेकंड वाली स्टेटमेंट मैम लॉस तो मैम समझ आ गया मैम, हाँ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू, मैम वो फर्नीचर अकाउंट का 2000 एक बार बता दो। हाँ मैं फर्नीचर का बताती हूँ बेटा। आपकी बुक से फर्नीचर कम हो रहा है क्योंकि फर्नीचर बिजनेस से बाहर जा रहा है। बुक में उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। So यस effectively, the reduction in value of furniture should be by 10,000 rupees. Okay, यस and that loss has been incurred on sale of furniture. तो वो फर्नीचर अकाउंट ही वहां पर क्रेडिट होगा। ठीक है, जब हम इसकी कंपाउंड एंट्री करेंगे, दिस बिकम्स कैश अकाउंट डेबिट बाय 8,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर again debited by 2,000, and you see furniture going out of the business will be a total of 10,000. यस मैम। Okay, I hope this is clear to everyone. Again, when I pass these journal entries in the books of ledger, कैश अकाउंट में जब आप डेबिट करोगे अमाउंट होगी 8,000 रुपीज और क्रेडिट करोगे फर्नीचर अकाउंट को। लॉस ऑन सेल अकाउंट को आप डेबिट करोगे अमाउंट होगी 2,000, क्रेडिट करोगे। शुड आई शो दिस एंट्री मैम लेजर? यस विकास। जब हम जर्नल के अंदर हम नॉर्मली करते थे तो इसके वॉइस क्रैक हो रही है बेटा आपके ना, नेटवर्क में कुछ इशू है। मैम इज इट ऑडिबल? या या मैम जब हम जर्नल हम लिखते थे तो उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखते थे, बस एक स्टेटमेंट लिखते थे एंड उसके बाद में डेबिट एंड क्रेडिट। तो हाँ इसके जी, अंदर कैसे करेंगे? इसमें भी बेटा आप स्टेटमेंट तो लिखोगे, नरेशन जो लिखते हैं यहाँ पर बीइंग करके प्रॉपर फॉर्मेट में पास करोगे आप एंट्रीज। अभी मैं समझा रही हूँ तो मैंने दोबारा से फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करा। यू हैव टू फॉलो दी फॉर्मेट। इसके अंदर तो जो वो डेट हो रहा है तो इसको हम कैसे उसके अंदर? I didn't get your question completely. मैम You लाइक are- इसके अंदर सेल्स अकाउंट भी एंड कैश अकाउंट भी। Please post your query in the chat box. Your voice is breaking in between. Okay, so I was class for the rest of you when I am talking about posting of this entry. Cash account में डेबिट साइड पर टू फर्नीचर अकाउंट 8,000, लॉस ऑन सेल अकाउंट में डेबिट साइड पर टू फर्नीचर अकाउंट 2,000 और फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 8,000, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट 2,000. That is how compound entries are posted in the ledger account. So Vikas, you can put in your question, I'll answer that. By that time, rest of you, let's move to the next example for journal entries. In two different steps where in the journal or ledger. मैम जर्नल। बेटा अगर ऐसे पास कर रहे हो फर्स्ट ऑप्शन से तो दो अलग अलग एंट्रीज हैं, और अगर आप ये वाली ऑप्शन चूज कर रहे हो कंपाउंड एंट्री की तो एक ही वो होगी ना एंट्री इसकी, तो दो स्टेप्स की जरूरत ही नहीं। दिस इज ऑप्शनल फॉर यू। मैम आप एक बार इस दोबारा समझाऊं? नो नो मैम सिर्फ
कैसे करनी है इसकी एक बार? आपकी मेरे को आधी आवाज आती है, आप चैट में डालो। मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ वंदन, तब तक आप पूछो। विकास, यू पुट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। यस वंदन। मैम जैसे हम मैम कंपाउंड एंट्री करते हैं हाँ जी। मैम, वो हमारा मैम लेजर अकाउंट तो वैसे जैसे नॉर्मल बनते थे वैसे ही बनेंगे, हाँ बस ये हाँ हमारा जर्नल छोटा कर देगा साइज में। हाँ हाँ। यस तभी है कि आपको जो कन्वीनियंट है, चूज यस ईदर ऑफ द वेज। मैम, लेजर तो मैम वैसे सेम ही बनेगा ना, जैसे पहले बनता था, बस हाँ जर्नल। पहले बनता था, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि अमाउंट के साथ बहुत केयरफुल रहना। यस मैम। कैश अकाउंट में आपने जब टू फर्नीचर लिखना है तो आप 10,000 नहीं लिखोगे, आप 8,000 लिखोगे, क्योंकि कैश तो डेबिट 8,000 से हो रहा है। यस मैम। ठीक है, तो इन चीजों में क्लियर रहना। अदरवाइज कंपाउंड एंट्री यस विल सेव योर टाइम। यस मैम। ओके, सो डू दी जर्नल एंट्री और लेजर एंट्री। यस मैम। ओके ओके वंदन, विकास, जर्नल एंट्री की मैंने दो ऑप्शंस दे दी आपको। इधर यू कैन गो फॉर ऑप्शन वन, wherein you will pass two entries, and second is where you are passing a compound entry. You are receiving 8,000 on sale of furniture. Furniture is going out of the business. You are receiving cash, which actually should have been 10,000, क्योंकि आपके हिसाब से उस फर्नीचर की वैल्यू 10,000 थी, आपको 8,000 मिला, इसका मतलब 2,000 आपका लॉस है। So cash account debit, cash is coming in the business. Loss on sale, losses are debited. Furniture account is credited by 10,000 because furniture going out of the business is valued at 10,000 rupees. So you have both the options of passing this entry. Okay, let's move to the next question. Now here you have four entries and we need to move them through the journal. So let us start with these entries. We come to the first entry first. I'll explain this entry, and then because you're given four entries here, we'll draw a proper format for journal and then pass these entries. Okay. Now in this question, the first part says goods worth 5,000 are given as charity. अच्छा, गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया। आई रिपीट माई सेल्फ, व्हेन गुड्स आर बीइंग परचेज्ड इट इज परचेजेस अकाउंट, व्हेन गुड्स आर बीइंग सोल्ड इट इज सेल्स अकाउंट, व्हेन गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न्ड बैक to the seller, say there is some defect, you are not happy with the goods you have purchased, the quality of goods, that is known as purchase return. And when, say, a customer is not happy with the quality of goods, he returns back the goods, that becomes the sales return account. So what we know by this time is कि जब भी purchases होती हैं, purchases account debit होता है. Yes, I hope this is very clear to everyone. If we are purchasing goods, then purchases account is debited because this is an expense for the business. Nominal account expense है, increase हो रहा है, as per modern classification it is debited. Now there are three cases where purchases account is credited. I will take up each of the cases. There are three exceptional cases where purchases account is credited. Can any of the commerce students tell me which are the three cases जहाँ पर purchases account हम credit करते हैं?
मैम लॉस ऑन फायर, Okay, loss by fire. Yes, very good. चैरिटी Charity. Yes, Free एंड samples. very good. Three samples. Okay. And can anyone tell me why do we credit purchases here? Ma'am, because the goods we purchased are are either destroyed or given as charity and free samples. For that, it's a loss for us, and we are not getting any cash for it. Yes, that is And it, actually the main reason. Hmm. Okay, thank you, Gautam and Kartike. Rest of you please understand these are three cases जहां पर हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. अब पहला जो केस है यहाँ पे आई विल टेक अप द केस ऑफ चैरिटी हेयर बिकॉज दैट इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन आल्सो. Goods worth 5,000 are given as charity. Charity is an expense for the business. Okay, it is not bringing in any additional income. You are giving out goods without receiving any cash in return. So charity account will be debited, okay, by rupees 5,000. Now what to credit here? गुड्स अकाउंट है. गुड्स अकाउंट में अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो हम उसको सेल्स अकाउंट में उस एंट्री को पास करते हैं. पर एक्चुअल में ये चैरिटी सेल्स नहीं है, ये एक्चुअल में आपका खर्चा ही है. परचेजेस की तरह ये गुड्स भी आपके लिए एक खर्चा ही बना. ओके, एंड इफ आई राइट सेल्स हेयर it would mean that the business is receiving something in return, which is not the case here. So instead of sales we credit purchases here. If I write sales, then it creates a right to receive money in the future. But charity will not be giving you any money in the future. So instead of sales, we credit the purchases account by rupees 5,000. मैम चैरिटी अकाउंट भी मैम नॉमिनल अकाउंट में आएगा. हाँ हाँ, नॉमिनल है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, लॉस है बिजनेस के लिए एक तरीके से. ओके, यस मैम. एनी अदर डाउट, एनीवन एल्स? So purchases account will be credited. ओके, उसी तरह लॉस बाय फायर हो रहा है तो आपके गुड्स क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बिजनेस से खत्म हो रहे हैं. सेल्स में आप नहीं डाल सकते क्योंकि सेल्स में यू गेट द राइट टू रिसीव मनी. तो यहाँ पर ये आ जाता है लॉस बाय फायर. आई एम शोइंग यू द एंट्री फॉर दीज एक्सेप्शनल केसेस, दो इट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. तो loss by fire account debit to purchases account. Again, you are crediting purchases here. Loss by fire, all losses are debited. मैम इसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट कैसे होता है वो एक बार थोड़ा समझा दो मैम. परचेज अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो रहा है, गुड्स अकाउंट है. गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, या परचेजेस में आएगा या सेल्स में. कायदे से सेल्स में गुड्स बाहर जाते हैं बिजनेस से, पर जब सेल्स होती है यू रिसीव अ राइट टू गेट मनी इन द फ्यूचर, विच इज नॉट द केस है. अगर चैरिटी कर दी तो उसके बदले आपको कैश नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको सेल्स अकाउंट में नहीं डाल सकती. आई पुट दिस इन द परचेजेस अकाउंट. यस मैम. Similarly, for loss by fire, once you lose goods by fire, you will not be receiving any money in the future. So I cannot credit sales here. So I credit purchases. Third case is free samples. Again, samples जब business distribute करता है तो वो advertisement expenditure होता है business का. I hope all of you know that this is part of the marketing campaign. कितनी बारी न्यूज़पेपर में आपको फ्री शैम्पू के सैशे या बॉडी वॉश के सैशे मिलते हैं,
or you go to a departmental store, they'll give you some free samples of a newly launched product. So this is all part of the advertisement expenditure of the business. So journal entry again here becomes advertisement account debit to परचेजेस अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स भी जो बिजनेस से बाहर गए इसके बदले आपको कैश नहीं मिलेगा. Okay, so here purchases account will be credited. Yes, are the three cases clear to everyone? Yes, ma'am.